So, the tragic death of 16 children allegedly following consumption of contaminated cough syrup has shaken India. The horror has now sparked nationwide outrage and a flurry of action. Madhya Pradesh Chief Minister has ordered an SIT probe, and the National Human Rights Commission has now stepped in, issuing notices seeking a detailed inquiry in this matter. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has cracked the whip after at least 14 children died in Madhya Pradesh, all victims of a single medicine, cold-riff cough syrup. The state's drug controller, Dinesh Maurya, has been transferred, while 2 drug inspectors and a deputy director of the Food and Drug Administration have been suspended. A local doctor has also been arrested for alleged negligence, and a special investigation team has been formed to probe the lapses that led to the tragedy. Now, the Chief Minister, who visited Chindwara to meet the families of the victims, said that all those responsible will face strict action. In fact, he also urged the opposition not to politicize the tragedy. Congress is mounting a sharp attack, calling it an example of unforgivable negligence and demanding the Chief Minister should focus on accountability and also sack his health minister. It's a real and unfortunate incident which has happened. And this has been happening for the last 2-3 months. We have seen 2 deaths in Rajasthan, where the government had reported on this, and unfortunately the green sheet was given to that pharma company. Now, a doctor writes a medicine, and how far he is responsible whether the medicine is genuine, adulterated? How can he say that? We have written a medicine, side effects, and when this was sent for investigation to Madras, they found out that it is impurities there in that. Let them do a independent inquiry, go into the depth of it and find out fact-finding who is responsible. हम लोगों ने एक डायरेक्शन जारी किया है यूपी गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि हम इस कफ सिरप के सभी नमूने लेंगे। हमारी जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी का जो है हम सीजर करेंगे, और ये जो पर्टिकुलर जितने भी बैचेस हैं, बैच नंबर जितने भी होंगे इस कंपनी के, और प्लस एक्स्ट्रा जितने भी हमारे कफ सिरप है, उन सभी का नमूना हम लेंगे, सैंपल करेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि हम देख सकें कि इस तरह की कोई घटना हमने यूपी में ना हो। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे 3 तारीख को इस बात की जानकारी मिली थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी बिना जांच करे और कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जहां इतने बच्चे कफ सिरप पीने के बाद मरे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं किसी बात की गड़बड़ नहीं है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं कि अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो उनसे तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं 8 दिन बाद। कल वो हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, वो जंगलों में गेंडे से मिल रहे थे, गेंडे को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरीके से अद्भुत अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है ये। 16 बच्चों की जान जाना। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करोगे तो लगेगा कि आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है।